Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू सोनू एंड थैंक यू राजेश। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Benchmark stocks hit lifetime highs. Sensex achieved 44,500 mark. Nifty climbs above 13,000 level. Asian and European stocks gain after formal resolution of the political uncertainty in the USA. And crude prices rise to trade beyond $46 per barrel amid hopes of demand creation after arrival of COVID-19 vaccines. शेयर बाजार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। सेंसेक्स 44,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 13,000 से ऊपर हुआ बंद। अमेरिका में राजनीतिक अनिश्चितता का औपचारिक हल निकलने के बाद एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी और कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद मांग बढ़ने की आशाओं के बीच ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $46 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज 1% का उछाल दर्ज करते हुए ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर पहुंच गए। वैश्विक बाजारों में वृद्धि के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 44,500 के स्तर से ऊपर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13,000 से ऊपर रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1.01% की वृद्धि से 446 अंक उछलकर 44,523 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की वृद्धि से 129 अंक बढ़कर 13,055 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी बढ़त का रुख था, हालांकि सेंसेक्स के मुकाबले बढ़त कुछ कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.58% की वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.89% की तेजी दर्ज हुई। Key domestic indices today zoomed 1% to hit lifetime highs. Amid gains in global markets, the BSE 30 share index Sensex achieved 44,500 mark. The NSE Nifty 50 index also ended at a record high as it climbed above 13,000 level. Sensex jumped 446 points or 1.01% to settle at 44,523. The NSE Nifty 50 index also surged 129 points or 1% to settle at 13,055. The broader market at BSE underperformed the Sensex as the BSE mid-cap index added 0.58%, while the BSE small-cap index appreciated 0.89%. In the Sensex pack, shares of 22 companies climbed, while 8 logged losses. Axis Bank was the top gainer as it climbed 4%, followed by Mahindra & Mahindra, which gained 3.5%. HDFC Bank surged 3.1% and ITC rose 1.2%. SBI and ICICI also gained more than 2%. On the other hand, HDFC plunged 1.5% and Titan declined 1.4%. Nestle India, Bharti Airtel and ONGC ended 0.6% down. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors climbed, except the telecom, which logged a marginal loss of 0.2%. Bankex gained 2.4%, while auto, realty and industrials surged 1.8%.
The overall breadth of the BSE trade was positive as 1,637 shares gained, 1,172 shares declined, and 191 remained unchanged. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजीव नागपाल, जो है बाजार विशेषज्ञ। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंच में। धन्यवाद चलो। राजीव, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि सेंसेक्स में अद्भुत तेजी है, आज भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। इनफैक्ट मार्च के जो लोज थे वहां से 70% से अधिक उछाल आ चुका है बाजार में। क्या लगता है आपको, ये जो एक हम तेजी देख रहे हैं बाजार में, ये कितनी आधारभूत है, कितने फंडामेंटल्स पर बेस्ड है और कितनी ये वैक्सीन की आशाओं पर बेस्ड है? देखिए, वैक्सीन की आशा से जो है वो ऑफकोर्स तो वैक्सीन की आशा है। जहां तक आपने फंडामेंटल्स की बात करी तो मार्केट ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग थिंग। अगर आप आज के नंबर्स पे देखेंगे तो शायद आपको एक्सपेंसिव लगे, पर बाजार की उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी। जो अनलॉक की प्रक्रिया है, जो अभी जो पूरी दुनिया में विश्व में नंबर दोबारा बढ़ रहे हैं, वो प्रॉब्ली द लास्ट सर्ज है और उसके बाद वो सब ठीक हो जाएगा। उसके चलते अब से 2-3 क्वार्टर बाद नंबर भी इकोनॉमी कंपनी के अच्छे लगने जाएंगे, तो उसके चलते ये आप तेजी देख रहे हैं। और अभी ग्लोबली सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी डाली हुई है, दिस इज स्टिल अबंडेंटली हाई एंड सम ऑफ देम इज नाउ कमिंग बैक टू इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लासेस। Okay, Rajiv, while foreign inflows have already broken to a new high on a monthly basis, the fact that they were the major driving force behind today's rally, purchasing shares worth over 4,738 crores, do you think investors will now keep an eye on buying by the foreign investors, as they have been, as I said, extremely bullish on the Indian market? Any profit booking is bound to have an adverse effect? Raj, I think to some extent, of course, a lot of money is coming, as I said, because central banks have pushed so much of liquidity, and a part of it is going to flow into emerging market and equity into asset class. I don't think so that if there is slight bit of profit booking, then we will see any sharp correction. Because if you look at the domestic flows after a couple of months, I think probably by end of early start of next year, we might see some more increase in the domestic flows to equity market, because slightly domestic investors have a tendency that if they start to see an asset doing well, they start to kind of go back into that asset. So that is one of the reason I expect. But yes, short-term corrections are part of life. I mean, we can assign a reason of FIs being slightly more cautious or not booking some profit, but that I don't think so that's going to cause any major issue or a very long-term issue. I mean, momentally for 10-15 days or months, we might see a correction, and it's a healthy correction. इनफैक्ट राजीव, आपने जैसे अभी कहा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता भी है, हाई लेवल्स पर होता है, तब भी उनके लिए एक दुविधा होती है, एक शायद फियर होता है कि कहीं मार्केट्स ओवरहीटेड तो नहीं है। तो अभी आप क्या ब्रॉडली एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? क्या उन्हें जो नहीं है इन्वेस्टेड, क्या उन्हें अभी इस बाजार में एंटर करना चाहिए? और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, क्या उन्हें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए या उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को सस्टेन रखना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना या इस टाइम पे बाजार में आना, ये वो इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो पिछले दिनों में काफी बढ़ गया है या अर्निंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है। जहां तक कि लार्जली मेरे को लगता है जो जिन इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो SIP वाला पैसा जो मार्केट में आता है उनकी है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रीजन कि आपको इस टाइम बाजार से निकलना चाहिए, बिकॉज वो अगेन टाइमिंग ऑफ मार्केट हो जाएगा, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग थिंग टू डू फॉर इफ यू आर इन्वेस्टिंग टू SIP। जहां तक उन निवेशों की बात है कि जिन्होंने जो अभी एंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर अभी भी एंटर होते हैं एंड इफ दे आर गोइंग थ्रू द रूट ऑफ SIP, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इन्वेस्टिंग एट दीज लेवल। द ओनली थिंग इज कि जब बाजार घटे तो घबराए नहीं, तब भी अपनी इन्वेस्टमेंट SIP को जारी रखें। Rajiv, related to what you just said, indications are in favor of the prevailing up move to extend further tomorrow, hopefully. So will the pace from here be gradual? Should the investors select basis sectors and stocks
and that should be the main focus given the rotational buying across the board? See, I think what's happened is that, after almost a period of 6-7 months, it is the financials which have now started participating. Financials, some of the large NBFCs, some of the sectors which were expected to get hit badly by the COVID crisis. Now, when financials move up because they form a large part of our index, they make index perform very well. As far as your question of sector is concerned, yes, of course, investing is all about investing in a business and the management of the company and not the stock price. So, if one has the ability or the skill set to time the market and look at the sectors, I think probably after under process of quite some time, it is mid-cap and some quality mid-cap which are likely to gain some more weight in coming months as money shift to them as compared to other large-cap stocks which were earlier quoting at a price earning multiple of 80 and 100 and were little defensive. Money was going there because of the balance sheet size rather than the growth in the bottom line. So yes, it depends, it's very tough to say with a broad brush that what sector you should look at. But yes, there are opportunities which probably will get, amplified over next 2-3 months in the mid-cap space. But one needs to be very cautious with them because the quality of the management is something which needs to be looked at the top of the list for an investment to be safe. Because what should realize is that, investing is never a problem. When the market falls, the stocks fall less. That is what is, probably one should look at this point of time, that if the market falls, my investment will fall less as compared to the market. राजीव, आज 19 में से 18 सेक्टर्स में हमने देखा है कि तेजी है. तो आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी हम देख रहे हैं मोमेंटम बाजार में, जो हम एक बहुत भारी उछाल देख रहे हैं, वो ब्रॉड बेस्ड है? आगे चलकर आपको क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स के प्रोस्पेक्ट्स आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं? जो सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें, आई थिंक प्रॉब्ली इट इज मोर बिकॉज ऑफ दी फैक्ट कि ये थोड़ा सा फाइनेंशियल में रहेगा, थोड़ा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज हैं उन पर शायद थोड़ा फोकस लग जाएगा आने वाले समय में. Okay, Rajiv, we all know that the stocks hit lifetime highs today, but also the fact is that the volatility indicator is also rising. Does it not show nervousness on the street? Oh, I don't think so. Nervousness, the volatility tend to rise. Volatility, essentially, if you look at it, anytime there is a spike in price on the upward or the southward direction, and the volatility numbers are going to show a spike. At this point of time, if you look at it, I won't say that volatility. I think the skepticism is still high on street. Retail participation is still very low. People are not able to correlate the fact that, that despite the market condition not being so good, how come the stock markets are moving? So there is a good amount of skepticism here. So I don't think so that one needs to be so, there is still a scope of, probably market doing well and volatility being ignored. Okay. Rajiv, thank you so much for throwing light on the current market situation. That was Rajiv Nagpal, market expert. We'll be taking a short commercial break and be back with you very soon. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है. अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे. ओ, तो ये बात है. हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए. बड़े भैया. अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. Welcome back. We have Sushma Ramachandran with us. She's our studio expert. Sushma, welcome back. Yeah, thank you. Okay. Market is inching higher with more confidence that COVID-19 vaccine will be available in India soon, with advantage on India's side. This is leading to hopes for a faster economic recovery, hence the way the market is moving to a lifetime high. What do you have to say about it? Well, I think
the market is reacting to two major issues. And I think today, of course, as you mentioned, the vaccine issue, of course, is very important. That has brought about, a great cheer in the market. The bullish run has continued. But the bullish run, as your earlier expert pointed out, has been going on for quite some time. And that is based on the fact that, all the recovery indicators are that finally there is some light at the end of the tunnel as far as the pandemic is concerned. It looks as if we're going to get some vaccines. The news about Pfizer and Moderna had come earlier. Now the news has come about AstraZeneca. At the same time, the uncertainty, and this is something that has gripped the world, the uncertainty over the transition in the United States has eased with the decision of their transition agency to hand over financial powers to the new president-elect. I mean, that's a very, very major issue. And thirdly, also in the U.S., the decision of the Biden administration, which is likely to be announced apparently, to put Janet Yellen as the Secretary of the Treasury has also cheered global markets, because Janet Yellen was heading the Federal Reserve at a time when there was this, this dovish stance, soft money policy, and it is expected that she would probably continue that attitude. So what does that mean for India? That means precisely what is already happening, what your expert earlier talked about, that central banks having pushed a lot of liquidity in the markets, the money is flowing here, that this process will continue. So you will have an administration and which would support this kind of a policy by the Federal Reserve. Though Janet Yellen obviously would not be heading the Fed, but even then there would be encouragement. A person who has followed that policy. So there is a feeling that this kind of dovish approach would continue, and India would continue to get the benefit of this liquidity from all over the world. So आपको लगता है कि यूएस स्टिमुलस की भी बात हो रही है काफी समय से, उसको भी शायद बढ़ावा मिल सकता है इस नए सरकार के आने से? हाँ, उसका भी ये इसलिए इनफैक्ट वो जो अमेरिका का जो स्टिमुलस है, अनुमान ये लगाया जाता है कि वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना लोग चाहते हैं, जितनी मार्केट चाहती है, जितना इंडस्ट्री चाहती है, क्योंकि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्टिमुलस चाहता है, लेकिन उनको कांग्रेस में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, यूएस कांग्रेस में, तो वो यूएस कांग्रेस में शायद जो पैकेज लाएंगे वो थोड़ा छोटा, काफी छोटा कर देंगे. तो उसके बैलेंस में ये होप ये है कि फेडरल रिजर्व अपनी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगा. स्टिमुलस मतलब लिक्विडिटी की जो ये फ्लो है ये कंटिन्यू करेगा. और ये जो नहीं प्लीज कर दो, अगर हम जी सॉरी प्लीज हाँ जी बोलिए. नहीं, मैं कह रही थी कि ये जो सारा माहौल जो है इसकी वजह से कोरोना वायरस की जो न्यूज आ रही है, यूएस में जो न्यूज आ रही है, और एक चीज हम भूल गए हैं इंडिया में, जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो इंडिकेटर्स हैं ये दिन ब दिन अच्छे फैक्टर्स आ रहे हैं. परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अच्छा आ रहा है, जीएसटी की जो कलेक्शंस हैं वो अच्छी आ रही है. आज एक खबर आई है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन काफी तेल बाहर से मंगवा रहा है क्योंकि उनकी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी पे चल रही है. तो ये दिन ब दिन जो अच्छी खबरें हैं इसकी वजह से ये जो बुल रन है वो मार्केट में कंटिन्यू कर रहा है. टुडे द जॉब डेटा इज आल्सो ऑन द प्री कोविड लेवल, सुषमा. यस, so that again is, as I said, every day you are getting some bit of small news which is encouraging the markets. And as your other earliest expert said, markets experts pointed out that the markets tend to anticipate and look towards the future. They're not really looking at the present, they're looking at the future, that all this should result in an economic recovery for this country, not only for this country, but globally. We are looking at that. The United States also, their data shows that business activity has increased, the highest for the last 5 years. So this kind of data that is coming in, despite the fact that the pandemic is still virulent in many countries, including India and the US.
इनफैक्ट सुषमा, FM ने कहा है भारत की अगर हम बात करें कि रिफॉर्म्स जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, और उन्होंने बजट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर काफी ध्यान देने की इंडिकेशन दिया है। तो आपको लगता है कि जो अभी लेबर कोड आया है, PLI शुरू हुआ है, FDI को खोला गया है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सेंटिमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल, यही जैसे मैंने कहा कि ये खबरें जो आ रही है अब, कई जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर काफी पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुआ है, जैसे कि फार्म बिल्स के बारे में काफी नॉर्दर्न स्टेट्स में ऑपोजिशन हुआ है। लेकिन अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट के जो व्यूज पढ़ें तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट इस फार्म बिल के फेवर में है। तो बाकी काफी रिफॉर्म, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने कहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई जगहों में चला गया है जहां पहले अलाउड नहीं था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव हो गया, हालांकि मैं समझती हूँ कि उसमें तो बहुत काम बाकी है। तो रिफॉर्म साथ साथ हो रहे हैं। सरकार ने अभी जो तीसरा स्टिमुलस पैकेज अभी अनवेल किया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट फ्लोज का फोकस किया है उन्होंने। तो ये अभी तक तो ये होप ये है कि इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो अभी तक अट्रैक्ट हो रही है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। So she has, in fact, the FM has said that the thrust on policies will be to promote investment activity in the economy, and she also said that we will have to make sure that policies are right to make India an attractive investment destination. So what's on the anvil? Well, it would be difficult to say what is on the anvil, but one would expect. Okay, what could be on the anvil? Yeah, I mean, even then, I think what we want, what anybody wants, that is a observer of the scene like myself, would want that they would ease a lot of bureaucratic red tape. I mean, this is one of the major factors impeding investment in this country. If a company wants to set up a factory or a unit here, it's very much more difficult for them to do it as compared to China or Vietnam or Indonesia. So we have to really ease up on all these system of approvals and cut back on red tape. And I think that is an area that I would hope that the finance minister would focus on as far as foreign investment is concerned. और आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपए में ये मजबूती प्रमुख रूप से घरेलू शेयर बाजार में वृद्धि और डॉलर में कमजोरी के बीच आई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.17% कम होकर 93.35 पर आ गया। सुषमा जी, फॉरेक्स रिजर्व हमारे ऑल टाइम हाईज पर पहुंचे हुए हैं और जो पहला क्वार्टर था इस फिस्कल ईयर का उसमें $20 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हमने देखा, जो भारत के लिए एक बहुत ही अजीब सी बात है। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन है और हमारी करेंसी कितनी स्टेबल है? देखिए, ये दो अलग चीजें हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात अगर हम करें, ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट थी इस साल खासकर तेल की बहुत कम हुई। अभी तो मैंने बात की थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने काफी सारी तेल की खरीदारी की है, लेकिन ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम हो गई थी, तो हमारे ऑयल इम्पोर्ट बहुत कम हो गए थे। तो जो हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत कम होने से हमारी ये जो रिजर्व हमारे काफी बढ़ गए थे। तो पहली बात तो ये है, और ये मतलब इन अ सेंस आप ये पॉजिटिव भी है कि रिजर्व बढ़ गए हैं और नेगेटिव भी है क्योंकि ऑयल कंजम्पशन का कम होना मतलब ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो रुपए की बात करें तो वो अलग है। रुपए हमारी करेंसी बहुत स्टेबल है इस साल। द करेंसी हैज रिमेन्ड रेंज बाउंड विद इन अराउंड 74-75 और इसमें इनफैक्ट हमारी जो करेंसी है इस साल अप्रिशिएट होने की की ट्रेंड में था और इनफैक्ट आरबीआई को मेरे ख्याल थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी कि डॉलर्स खरीद के इसको थोड़ा सा काबू में लाए।
So currency is in a good situation right now. Rupee is in a good place right now, and there is the rupee, of course, is stable. There's nothing to worry on the currency front. चलिए अब लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में पहले ही कारगर कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की आशाओं के बल पर उत्साह था। इसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को औपचारिक स्वीकृति मिलने के बीच इस क्षेत्र के बाजारों में आज तेजी का रुख रहा। जापान का निकेई सूचकांक 2.5% के उछाल में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.5% की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% की बढ़त पे रहे। हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी ताजा समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में तेजी का रुख था। जर्मनी का डैक्स 1.3% की बढ़त पर था। लंदन का फुटसी 1.2% की वृद्धि पर था और फ्रांस के कैक में 1.3% की बढ़ोतरी थी। The blue chip Dow rose yesterday as hopes of COVID-19 vaccine fueled demand for economically sensitive stocks such as energy and industrials. On the other hand, a sell-off in technology heavyweights capped gains of the S&P 500 and the Nasdaq. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.1% and the S&P 500 gained 0.6% and the Nasdaq Composite Index added 0.2%. Moving on, the global oil prices today rose after the formal conclusion of political uncertainty in the USA. Hope of demand creation amid arrival of COVID-19 vaccines also boosted crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $46.50 per barrel, while WTI crude prices were around $43.60 per barrel. Quickly, Sushma, two positive news leading to a boost in crude prices. How far do you see this boost going, and how far can we allow this level to be comfortable for us? At the current level, I mean, it's at $45, $46. India is very comfortable. And I do not anticipate that we are going to have a very sharp increase in crude oil prices, even though there is an expectation that OPEC Plus is going to delay some crude supply increases. अब चलते चलते सोने पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के अनुरूप सोने के मूल्य आज भारी गिरावट में रहे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में सोना 730 रुपए सस्ता होकर 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और चांदी 1,035 रुपए की गिरावट से 59,490 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना 1.5% की मंदी से लगभग $1,813 प्रति आउंस पर था और चांदी 1.9% की भारी गिरावट से $23.20 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark stocks hit lifetime highs. Sensex achieves 44,500 mark. Nifty climbs above 13,000 level. Asian and European stocks gain after formal resolution of the political uncertainty in the USA, and crude prices rise to trade beyond $46 per barrel. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.